बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूँगा। इस असाइनमेंट के टोटल 20 मार्क्स हैं और ये स्प्रिंग 2022 की पहली असाइनमेंट है। और इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं। सबसे पहले तो आपने MS वर्ड में फ़ाइल अपलोड करनी है और असाइनमेंट जो है वो 100% जूम होनी चाहिए और इसके अलावा प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, 100% यूनिक होनी चाहिए और ड्यू डेट में आपने सबमिट करनी है। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपकी किसी लॉजिकल रीज़न की वजह से असाइनमेंट सबमिट नहीं होती तो आप ईमेल के ज़रिए भी सबमिट कर दें और साथ में अगर आप कोई लॉजिक के साथ इंस्ट्रक्टर को कायल कर सकते हैं तो इंस्ट्रक्टर आपके जो असाइनमेंट है वो कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना और फ़ॉन्ट जो है वो आपके 12 होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन में। यहाँ पे अगर आप असाइनमेंट विचुनसी से अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि CGPA किस तरह से लेने हैं तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताई गई हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। और इसके अलावा असाइनमेंट 100% जो है ना यूनिक किस तरह से बनानी है और असाइनमेंट जो कॉपी पेस्ट है उसको किस तरह से यूनिक बना के अपलोड करना है, तो उसकी भी 5 यूज़फुल टिप्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक के ज़रिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके थ्रू आउट प्रोग्राम स्टडी प्रोग्राम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, रीडिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। द पर्पस ऑफ रीडिंग इज़ टू comprehend and infer meanings from written text. A passage has been given. Your task is to read the passage carefully and answer the multiple choice questions given below. यहाँ पे सिंपल आपने एक पैराग्राफ रीड करना है और आपने उसके नीचे जो आंसर्स दिए गए हैं आपने उनको जो मल्टीपल चॉइस है वो आपने जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करना है। सिंपल से जो एक असाइनमेंट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक और टिप आपको बताता चलूँ कि इस तरह का कोई भी पैराग्राफ को आपने सॉल्व करना हो तो उसका जो सही तरीकाकार है वो ये है कि आप क्वेश्चंस को पहले रीड कर लें 2 मरतबा, आप क्वेश्चंस को समझ लें, उसके बाद फिर आप जो है ना इनकी जो पैराग्राफ है उसको 2 मरतबा रीड कर लें तो आपका जो आंसर्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ को रीड करते हैं। कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप कैन बी कंसेप्चुलाइज्ड एज एन enduring and relatively stable characteristics or disposition such that individuals differ in the way they are generally expected to behave in sports situations. General sportsmanship refers to virtues such as fairness, self-control, courage, and persistence, and has been associated with the interpersonal concepts of treating others and being treated fairly. Maintaining self-control if dealing with others and respect for both authority and opponents. Sportsmanship is also looked at as being the way one reacts to a sport game played. The 4 elements of sportsmanship are often shown to be good form, the will to win, equity, and fairness. All 4 elements are critical, and a balance must be found among all 4 for true sportsmanship to be illustrated. These elements may also cause conflict, as a person may desire to win more than play in equity and fairness, and thus resulting in a clash within the aspects of sportsmanship. This will cause problem as the person believes they are being a good sportsman, but they are defeating the purpose of this idea, as they are ignoring 2 key components of being sportsman-like. When athletes become too self-centered, the idea of sportsmanship is dismissed. यहाँ पे जो ब्लू कलर में हाईलाइट है ये शो कर रहा है जो कि आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ जो दिया गया है वो स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज़ और इसके ऊपर जो है ना वो दिया गया है। और इसका जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं
इज़ इट नेसेसरी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑल द फोर एलिमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप? यस, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि जो फोर एलिमेंट्स हैं वो शोन होने चाहिए टू बी ए गुड फॉर्म, और ये चारों ज़रूरी हैं स्पोर्ट्समैनशिप के लिए. वाई हैज़ स्पोर्ट्समैनशिप टेकन अ बैक सीट टुडे? ड्यू टू एम्फोसाइजेस ऑन विनिंग. यहाँ पे देखें ये आपके सामने ब्लू कलर में है. द आइडिया टू कंपटीशन एंड विनिंग एंड द स्पोर्ट्समैनशिप टेक्स अ बैक सीट एज ए रिजल्ट. थर्ड नंबर पे, इफ वन डज नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस डिफीट वन इज़ कॉल्ड सोर लूजर. यहाँ पे देखें आपके सामने ब्लू कलर में, सोर लूजर बिहेवियर्स इंक्लूड्स ब्लेमिंग अदर्स फॉर द लॉस और नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सनल एक्शंस एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिफीट. ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे, फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड डीप. ये शैलो आएगा. व्हेन डज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप डाई? यहाँ पे देखें ब्लू कलर में आपके सामने है, इंक्लूड्स अदर्स फॉर लॉस, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्सनल एक्शन दैट कंट्रीब्यूटेड टू डिफीट. ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन द स्पोर्ट्समैन बिकम टू सेल्फ सेंट्रेड, ये आपके सामने है जी. कहाँ पे है? इसको मेरे ख्याल हाईलाइट किया था. बहरहाल इसका जो आंसर है वो यही आ रहा है जो कि आपके सामने हाईलाइट हुआ है. व्हेन द स्पोर्ट्समैन बिकम्स टू सेल्फ सेंट्रेड. क्वेश्चन नंबर 2 में है, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आर ऑफन वोवन टुगेदर इन टेक्स्ट एंड स्पीचेस फॉर हायर लेवल रीडिंग comprehensions. It is essential that you are able to unravel the threads of what is true from what is mere belief. Keeping this in mind, read the given story carefully and then identify the given statements as fact or opinion. यहाँ पे फैक्ट और ओपिनियंस को आपने आइडेंटिफाई करना है. एक स्टोरी दी गई है जिसके अंदर से फिर 5 जो है ना वो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपने क्या करना है, फैक्ट और ओपिनियन चेक करना है. फैक्ट और ओपिनियन को देख लेने वैसे होता क्या है. A fact is a statement that can be proven true or false. An opinion is an expression of a person's feeling that cannot be proven. Opinion can be based on facts or emotions, and sometimes they are made to deliberately mislead others. ठीक है, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो देखें. जैक lives in a small town in Australia. The closest big city is an hour's drive away. Jack looks forward to going to the city because when they drive through the countryside, they almost always see kangaroos. Sometimes they even see a baby kangaroo riding in its mother's pouch. Jack knows all about kangaroos. Baby is called a joy, a mother is called Doy, and a father is called Boomer. A group of kangaroos is called Mob. Once Jack saw a kangaroo jump about 3 times its height. It was an amazing sight. He knows that when kangaroos are hopping along at high speed, they can go as fast as 40 miles per hour. Jack also knows that even thought kangaroos are fun to look at, you would not want to try to pet one. If a kangaroo thinks it is in danger, it just might lean back on its big tail and kick you with its back feet. ठीक है, ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर से आपने जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके फैक्ट एंड ओपिनियंस बताने हैं. तो यहाँ पे फैक्ट्स क्यों बन रहे हैं और ओपिनियन क्यों बन रहे हैं ये मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ. जैक लिव्स एन आवर्स ड्राइव अवे फ्राम, ये एक फैक्ट है क्योंकि वो 1 घंटा दूर सफ़र से मुसाफत के ऊपर जो शहर से रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी का ओपिनियन नहीं है. ठीक है. जैक लाइक्स व्हेन हिज फैमिली ड्राइव्स टू द सिटी.
यहाँ पे ओपिनियन आ रहा है क्योंकि जैक लाइक कर रहा है। कुछ किसी को सिटी की तरफ जाना पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। ये ओपिनियन की साइड आ गया। बेबी कैंगरूज आर कॉल्ड जॉयस, ये एक फैक्ट है क्योंकि ये प्रूवन है और ये मतलब कि किसी की चॉइस नहीं है, किसी ने खुद नाम नहीं रखा हुआ, ये एक नॉलेज में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जैक वाज अमेज्ड एट द साइट ऑफ अ कैंगरू जंपिंग ऑलमोस्ट 3 times इट्स हाइट। ये ओपिनियन है क्योंकि इसमें जैक अमेज्ड हुआ है और अगर कोई और देखे तो वो अमेज्ड नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही अमेज हो, तो इस वजह से ये क्या होगा, ओपिनियन होगा। कैंगरूज कैन सस्टेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर्स। ये फैक्ट है क्योंकि ये प्रूवन है कि जो कैंगरूज हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से जो है ना उसको सस्टेन कर सकते हैं स्पीड को। वो इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। और इसके अलावा अगर आप सॉल्व क्विज़ असाइनमेंट सोल्यूशन, CGPA सोल्यूशन, इसके अलावा मिड टर्म फाइनल टर्म के करंट पेपर्स के लिए और उनके सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल के शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।